Hello, and welcome to episode 1 under the Nurturing Parenting series. As I said, we will have 7 episodes where I will talk about regular situations that every parent, every child goes through. और जैसे मैंने बोला था, मैं यहाँ पे ज्ञानबाजी देने के लिए नहीं हूँ, यहाँ पे ये दिखाने के लिए नहीं हूँ कि पेरेंट्स अपना काम गलत कर रहे हैं, नहीं. आई एम ट्राइंग टू एक्ट लाइक अ पार्टनर, पेरेंट्स के लिए भी और किड्स के लिए भी. हाँ, दिस वीडियो इज मेनली इंटेंडेड फॉर माई लिटिल फ्रेंड्स बिकॉज जैसे मैंने कहा था, आई फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल बी देमसेल्व्स एंड रूट्स ऑफ ऑथेंटिसिटी can be traced back to our childhood. Based on messages we get, based on the situations that we go through, we determine our personality and we start behaving with the society based on those experiences and messages. तो वो अपनापन जो अंदर रहता है वो कहीं खो जाता है. इसीलिए ये वीडियोस जो है वो मेनली बच्चों के लिए है एंड बच्चों की मदद करने के लिए पेरेंट्स इस वीडियो को देख के उन बच्चों की मदद कर सकते हैं. सो लेट मी गिव यू अ क्विक sneak peek into the episodes that you can expect. So there are 7 episodes. Episode 1, which is today, the first episode is about kids and their identity. So I've called it Kids Have Their Own Identity. Episode 2 will focus on nurturance versus pampering. Episode 3 will focus on the case of the curious child. So if your child keeps asking you millions of questions, then we'll talk about it. Episode 4 is about tackling tantrums. Episode 5 is about tackling aggression. Episode 6 is about how you, as a parent, can stop comparing your child to other kids. And the last episode, episode 7 under this series, will focus on helping you understand your child's nature. Right? तो आ जाते हैं एपिसोड 1 की तरफ, विच इज किड्स हैव देयर ओन आइडेंटिटी. एंड आई एम श्योर यू नो दैट, राइट? बट ये आइडेंटिटी जो होती है वो शुरू होती है उनके जन्म के दिन के पहले दिन से. राइट फ्रॉम द टाइम योर चाइल्ड इज बॉर्न, इट कम्स विथ इट्स ओन आइडेंटिटी. Whether you want to accept it or not, that is up to you. I've seen many parents कि जन्म हुआ है, पहला ही दिन है. Obviously, the baby will cry. That's the only language the baby understands. There are parents who get very anxious. Why is my baby crying? Why is my child crying? अरे भैया, जब आपको भूख लगती है तो आप भी तो टैंट्रम्स थ्रो करते हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपके वो पिता, कोई भी हो. यू कीप throwing tantrums. So the child, this is the only language it understands, and that's how it responds. You know that. मुझे बताने की जरूरत नहीं है. All I'm saying is that I've seen parents, पहले दिन अगर बच्चा रो रहा है तो बच्चा क्यों रो रहा है ये सोच के टेंशन लेते हैं. You are kind of sending those messages to your child. If you think your child doesn't understand anything, I'm sorry to say कि भले ही उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हुई है, बट द सबकॉन्शियस माइंड इज अवेक एंड इट रजिस्टर्स ऑल दोज मैसेजेस. बात करने नहीं आ रही इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता. वो आता है. वो जब बड़े हो जाते हैं वो धीरे धीरे वो मैसेजेस उनके दिमाग में आ जाते हैं. बट विल कीप दैट फॉर अनदर डे. इफ योर बेबी इज हंग्री, this is about talking about a child, a baby that is not even a day old. I've seen, again, I'm repeating, I've seen parents who've done this. There are people who've come to see the baby and the mother, but the baby is hungry. So there have been instances where they have
Indirectly ask the child to sacrifice its hunger because people have come to see you. Baby, people तुझे देखने आए हैं, तू जरा रुक. I am not exaggerating, boss. I have seen this. And me and my wife, when we saw it, we were like, what the hell is wrong with these guys? So when your baby is hungry, ensure that you give priority to your child, to your baby, regardless of its age, right? If your baby is sleeping, and if there are people who've come to see the baby, then please ask those people to wait. Don't make the mistake of waking up your child. Yeah? Don't make the mistake of waking up your baby. यार उसकी भी एक आइडेंटिटी है. इमेजिन, आपको अगर कोई गहरी नींद से उठाए तो आपको क्या लगेगा? आपको गुस्सा आएगा. यू विल थ्रो टैंट्रम्स. एंड व्हेन द बेबी डज इट, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर शी. नहीं यार, गलत है. बेबी की भी तो आइडेंटिटी होती है, राइट? अब ये मैं बचपन की बातें क्यों कर रहा हूँ? ये बचपन की बातें कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा था, ऑथेंटिसिटी तो पहले दिन से ही शुरू होती है. यू आर नॉट अलाउिंग योर बेबी टू बी who he or she is. Allow them to breathe, allow them to cry, allow them to make mistakes. जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है, फिर आप सोचने लगते हो कि अरे मेरी बहन का बच्चा तो इससे ज़्यादा तेज है, मेरा नहीं है, right? That's what happens. You will compare your child. If your child is someone who is very silent, जो एक जगह पे बैठे रहता है, आप उसको टैग करोगे कि ये भोंदू है. अगर आपकी बच्ची मस्ती कर रही है तो यूल बी लाइक, बहुत मस्ती करती है यार, बहुत बड़बड़ करती है यार, ये वो ये. यू टैगिंग योर चाइल्ड, राइट? एंड इफ योर बेबी इज समवन हु इज वेरी aggressive, you'll be like, this child is very aggressive, let me punish my child. पनिशमेंट से ही ठीक होगा ये? नहीं, पनिशमेंट से ठीक नहीं होगा. आप लोग ये सब कर रहे हो बिकॉज यू फील दैट द चाइल्ड इज हियर टू प्रोटेक्ट योर ओन इमेज, योर ओन आइडेंटिटी. अगर मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चों जैसा बर्ताव नहीं कर रहा तो मेरा नाम खराब हो रहा है, और मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए. इसीलिए मैं अपने बच्चे को फोर्स करूंगा या करूंगी, नीचे जा, खेल, बच्चों से बात कर, स्विमिंग के लिए जा, क्रिकेट के लिए जा, इसके लिए जा, उसके लिए जा. अरे बच्चा है यार. अंडरस्टैंड व्हाट द बेबी वांट्स, अंडरस्टैंड व्हाट योर चाइल्ड वांट्स. अगर उसको मस्ती करनी है तो वो करेगी, अगर उसको नहीं करनी है तो नहीं करेगी. उसको अगर एक जगह पे बैठ के अपने साथ खेलना है तो खेलने दो. उसकी अगर कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो, अगर उसका 1 साल हो, 2 साल हो या 10 साल हो यार, इफ द बेबी हैज नो इंटरेस्ट, अंडरस्टैंड व्हाई. Don't judge your child. You are killing the child's identity, and the day you start judging your child, you are in a way killing your child spiritually, you are killing your child mentally. And then when the same child throws tantrums, when the same child shows aggression, आप क्या करते हो? फिर से जज करते हो और चपेट लगाते हो. Then the child becomes a rebel, and बस बन गई. You already know that children are like wet clay, right? And you can mold them in whatever shape you want, right? And they are quick learners, so they will absorb everything that you tell them. So instead of judging your child, instead of thinking your child is here to protect your image और तुम्हारा नाम रोशन करने के लिए उसने जन्म लिया है, तो बॉस आप गलत हो. Focus on teaching your child the art of self-love and allow them to be who they are, allow them to make mistakes, allow them to fail, and continue to handhold them until you feel that now they are independent enough to manage their lives. But remember कि handholding is different from micromanaging, right? So how do you protect your child's identity? Is by respecting their choices, by allowing them to make mistakes. Yes, if they are being unnecessarily aggressive about things, if they are
throwing tantrums, then as a parent, you have every right to correct that behavior. But again, there is a way of correcting it. Do not, do not judge them for what they've been doing. Take them to another room or to some other place and understand why they did what they did and explain them. प्यार से समझाइएगा. किसी भी चीज को समझाने के लिए 4 चांसेस देने जरूरी होती है. पहले चांस पे प्यार से बात करोगे, दूसरे चांस पे अगर वही सेम गलती हो गई है तो आप पूछोगे कि अरे मैंने तुमको बताया था तो क्या हुआ. तीसरी बार आपका टोन थोड़ा स्टर्न होगा, और अगर वो गलती चौथी बार हुई तो यू हैव टू टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द चाइल्ड. वो कैसे करना है वो आप जानते हो, बिकॉज यू आर द पेरेंट, राइट. अनदर वे टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड इज, ये भी मैंने देखा है कि आई हैव सीन ऑन मल्टीपल ओकेजन्स कि अगर कोई किसी चाइल्ड को बोल रहा है कि नाच के दिखा, ओ कम हियर गिव मी अ किशी, और अगर दूसरे बच्चे ने किशी दी और आपके बच्चे ने किशी नहीं दी तो यू फील बैड बिकॉज बॉस मेरे बच्चे ने किशी नहीं दी तो ये इंसान मुझे जज कर रहा है, और वो इंसान आपको जज नहीं करे इसलिए यू स्टार्ट टैगिंग योर चाइल्ड टू बी यू आर वेरी मीन, यू आर नॉटी, यू आर दिस, यू आर दैट. क्या कर रहे हो यार? So the next time you judge your child, the next time you feel that your child is not meeting your expectations, bring in that awareness and tell yourself that your child is not here to protect your identity. Your child is not here to please you. Your child is here to fulfill and walk on its own purpose. Love your child, which you already do. But by judging your child, are you really loving your child? वो एक्सपेक्टेशन शीट नहीं है, वो एक प्रोजेक्ट नहीं है कि आपको इससे एक्सपेक्टेशंस हो. इट इज अ ह्यूमन बीइंग. वो आपका बच्चा होने से पहले एक इंसान है और इंसान की आइडेंटिटी होती है, आपको ये समझना जरूरी है. सो द नेक्स्ट टाइम यू आर जजिंग योर चाइल्ड, bring in that awareness and ask yourself, why are you tagging this child? Why are you judging this child? And slowly focus on bringing about a change in your mindset, which will automatically help you start respecting the child's identity. अगर आप ही अपने चाइल्ड की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो चाइल्ड अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और फिर दुनिया आपकी चाइल्ड की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और फिर आप अपने बच्चे को और दुनिया को गाली दोगे कि हाउ डेयर यू नॉट रिस्पेक्ट माई चाइल्ड. सो लर्न टू रिस्पेक्ट योर चाइल्ड, लर्न टू रिस्पेक्ट योर चाइल्ड्स आइडेंटिटी, एंड ऑल्सो रिमेंबर रिस्पेक्टिंग आइडेंटिटी के साथ learn to respect your child's boundaries. If the child is busy playing, see what it wants. Don't go and disturb. आपके काम में अगर आपके बच्चे ने डिस्टर्ब किया तो आप शुरू में प्यार से बात करोगे, बाद में चिल्लाना चालू करते हो. द सेम थिंग अप्लाइज टू योर चाइल्ड. इंसान ही है आपके जैसा. So always remember, your child has an identity. Understand that identity, respect that identity. Child also has its own boundaries. Respect that. Child will respect your boundaries. Believe me. Yeah. So that's all I have to say. Next week when we meet, we will talk about nurturance versus pampering. Until then, take care and remember to respect your child's identity and stop judging yourself, stop judging your child. Thank you. Take care and all the best.